your screen's on fire. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फिनिटी हार्ड रॉक ऑक्टाबेस 410 का डिटेल साउंड टेस्ट। दोस्तों इससे पहले हमने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट हो या बैटलग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। एंड दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 12,800 रुपीज। वैसे हमने ये सूट काफी पहले ले लिया था। मैं डिस्क्रिप्शन में जो परचेज लिंक दूंगा आप वहां पे से देख लीजिएगा। अभी का लेटेस्ट प्राइस इस मॉडल का चल रहा है। एंड अगर आपको इस मॉडल को परचेज भी करना होगा तो जरूर से यार हमारे चैनल के लिंक से परचेज कर लीजिएगा, ताकि हमें इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने इंडोर साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए दोस्तों, हमने अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying under the bar. Wish on a star. Time to show who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Time it is. Marvin Devine, Uber, Axel, and you know how we go.
Down with the bass and sound. I know Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, you're with commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's kind of hated. चलिए दोस्तों, अब हम आपको थोड़े इस पर मूवी ट्रेलर प्ले करके सुना देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है इस पर हमें इको मोड मिल जाता है। सो अगर आप मूवी वॉचिंग के लिए इस सिस्टम को परचेस करते हैं तो आपको किस तरीके का साउंड इफेक्ट मिलता है। सो इस वजह से हम आपको इसमें थोड़े ट्रेलर प्ले करके सुना देते हैं। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। हम पे किसका जोर। फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। Right now, you're listening to where cinematic audio has been. It could be captivating, subtle, authentic. What if sound could be deeper? सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको इस मॉडल की साउंड क्वालिटी, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर कितनी बढ़िया साउंड क्वालिटी हमें मिल जाती है। सो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएगा कि आपको किस तरीके की लगी इस मॉडल की साउंड क्वालिटी। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों यार मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे बहुत डिले हो गया इस मॉडल का डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो लाने में। सो उसके लिए दोस्तों आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आप सबकी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इस मॉडल का जल्दी से डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो लेकर आइए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यार दोस्तों कि इस पर हमें किस तरीके का साउंड आउटपुट मिल जाता है जो कि मुझे लगा है। दोस्तों यार साउंड क्वालिटी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा कमाल की हमें इस मॉडल पर भी मिल जाती है। बेस क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लाउडनेस भी काफ़ी बढ़िया है, क्लियरिटी, इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। जैसा कि आप सबको पता है इससे जो पहले इन्फिनिटी का 2.1 आया था, इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210, जो कि इससे पहला वाला मॉडल है दोस्तों, उस पर भी आप सबको पता है साउंड क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती थी। बट दोस्तों यार उस मॉडल का जो प्राइस था वो भी काफ़ी सही रखा था इन्फिनिटी ने। एंड दोस्तों इस मॉडल का जो प्राइस है ना वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गया है। अगर दोस्तों ये 7 से 8,000 तक की रेंज में आता तो मेरे हिसाब से यार ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम होता अंडर 8,000 रुपीज़। बट यार 12,800 रुपीज़ तो यार कहीं पे भी वर्थ नहीं है इस मॉडल के लिए, क्योंकि आप सबको पता है यार ना ही हमें इस पर डिस्प्ले मिल जाता है, मतलब एलईडी डिस्प्ले तक हमें इस पर नहीं मिलता है। एंड ना ही हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट मिलता है, ना ही हमें HDMI ARC पोर्ट मिलता है। सो बहुत सारी चीज़ें हमें इस मॉडल पर नहीं मिलती है। एंड इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका D40 के अकॉर्डिंग अगर प्राइस रखते तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। सो प्राइस के हिसाब से दोस्तों मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप इस मॉडल को परचेस करिए। हाँ, इसका प्राइस फ्यूचर में अगर ड्रॉप होता है, यानी कि 8 से 7,000 तक की रेंज में हमें मिलता है इसका प्राइस, तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। बट दोस्तों 12,800 में आप बिल्कुल भी इस मॉडल को परचेस मत करिएगा, ये मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ।
सो दोस्तों आशा करता हूँ यार ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एंड दोस्तों इस बार हमने बहुत सारे नए ट्रैक्स ऐड करे हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।